हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन मैथ विद अकेडमी। तो आज के लेक्चर में हम लोग बेसिस एंड डायमेंशंस के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो कि सीएसआईआर नेट के अंदर पूछी गई हैं। और उससे पहले हम दो फार्मूले हैं जो कि इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, उनको हम देख लेते हैं कि बेसिस एंड सबस्पेसेस ऑफ अ फाइनाइट वेक्टर स्पेस काउंटिंग कितनी होती, कितनी बेसिस बन सकती हैं एंड कितने सबस्पेसेस बन सकते हैं फॉर अ फाइनाइट वेक्टर स्पेस के अंदर। ठीक है, तो लेट अस राइट द फार्मूला। So here are the two results. First one, that is, if I am taking let this is Vn over Zp. ठीक है, Vn over Zp, V a finite vector space finite vector space of dimension n, जिसकी डायमेंशन n है। I'm just taking VnZp with a finite vector space of dimension n over the field Zp, over the field Zp. Then the total number of distinct bases is, कितनी बेसिस बन सकती हैं अगर हमारे पास जेड और यू नो दैट इज पी द एनी प्राइम नंबर, so then the total number of distinct bases is, you have this is p की power n minus p की power n minus 1 एक ब्रैकेट में, and then p की power n minus p की power n minus 2, and so on up to p की power n minus p, and this is p की power n minus 1। ठीक है, and divided by factorial n। फैक्टोरियल n, ठीक है। तो दिस इज p की पावर n माइनस p की पावर n माइनस 1 इंटू p की पावर n माइनस p की पावर n माइनस 2 अप टू p की पावर n माइनस p इंटू p की पावर n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n। तो दिस इज द काउंटिंग ऑफ बेसिस, कितनी बेसिस बन सकती है उस फाइनाइट वेक्टर स्पेस की। ठीक है, तो वो हमारे पास क्वेश्चन कभी पूछा जाता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड द नंबर ऑफ सब स्पेसेस, कितने सब स्पेसेस बन सकते हैं। So I'm just taking, let this Vn Zp be a finite vector space of dimension n over the field Zp, then the total number of subspaces of dimension r
R is R डायमेंशन के कितने सब स्पेसेस बन सकते हैं, वी आर गोइंग टू फाइंड। तो वी एन जेड पी विद अ फाइनाइट वेक्टर स्पेस of dimension n over the field ZP, then total number of subspaces of dimension R. R dimension के कितने हमारे subspaces बन गए? We are starting here. This is p to power n minus p to power r minus 1, p to power n minus p to power r minus 2, up to this is your p to power n minus p, and that is equal to p to power n minus 1. Okay, and divided by p to power r minus p to power r minus 1, and this is p to power r minus p to power r minus 2, and so on. This is p to power r minus p, and this is p to power r minus 1. Clear? So this is your तुम्हारे पास नंबर ऑफ सब स्पेसेस ऑफ डायमेंशन आर डायमेंशन के कितने सब स्पेसेस बन सकते हैं? सिंपली p की पावर n माइनस p की पावर r माइनस 1, p की पावर n माइनस p की पावर r माइनस 2, अप टू p की पावर n माइनस p इंटू p की पावर n माइनस 1, and this is p की पावर r, we are starting from r, p की पावर r माइनस p की पावर r माइनस 1, p की पावर r माइनस p की पावर r माइनस 2, अप टू p की पावर r माइनस p and p की पावर r माइनस 1। क्लियरली? अब लेट अस सी, अब कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो सपोज दैट एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि find the number of distinct bases of the following vector spaces Number first is Z2 of this Z3 over okay, and similarly नंबर कुछ और क्वेश्चन है, चलिए वन बाय वन करते हैं। तो यहाँ पर कुछ ये इस तरीके से वेक्टर स्पेस है, जैसे होता नहीं Z2 इज अ फील्ड, यू कैन जस्ट राइट हियर दिस इज V, Z2 द फील्ड, ये कुछ इस तरीके का वेक्टर स्पेस है। दिस इज योर F3 Fn ऑफ F। तो इसकी जो डायमेंशन होती है ना, वो हमारे पास n होती है। तो यहाँ पर अगर हम डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन जो हो जाएगी वो तुम्हारे पास कितनी हो जाएगी? ठीक है, ये फील्ड की पावर n अपॉन f है ना, तो इसकी डायमेंशन n होती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो हमारे पास डायमेंशन हो जाएगी इस वेक्टर स्पेस की, वो हमारे पास 3 हो जाएगी। तो ये n इज जस्ट इक्वल टू, ये तुम्हारे पास आपको मिला n। अब n मिला, p यहाँ पर कितना है? p इज जस्ट इक्वल टू 2, है ना, ZP लिखते ना। तो द फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बेसिस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर स्पेस। तो यहाँ पर हमें फार्मूला लिखना है, सिंस नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बेसिस इज जस्ट इक्वल टू, क्या होता था, p की पावर n माइनस p की पावर n माइनस 1, फिर p की पावर n माइनस p की पावर n माइनस 2, अप टू p की पावर n माइनस का p, and this is p की पावर n minus 1 divided by factorial n। ये तुम्हारे पास होता था। ओके, दिस वाज द फार्मूला, अभी हमने पढ़ के आए हैं।
कि हमारे पास कितनी जो है बेसिस बनती है। तो ये फार्मूला था पी की पावर n माइनस पी पावर n माइनस वन, ऊपर वाला था बेसिस। तो किस बेसिस है n माइनस वन पी की पावर n माइनस पी की पावर n माइनस टू अप टू पी पावर n माइनस पी इंटू पी पावर n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल n। तो ये नंबर ऑफ हमारे पास बेसिस की बात करता है कि कितनी बेसिस हमारे पास काउंटिंग में बनेंगी। तो सिंपली वी नो अबाउट द p। तो p जो है तुम्हारे पास 2 है, तो 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2 n माइनस वन मतलब 2। सिमिलरली दिस इज 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 1 and this is 2 the power 3 minus the 1। clear? Divided by factorial n मतलब factorial 3। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, दिस इज योर 8 माइनस का 2 4, और यहाँ पर 8 माइनस का 2, और दिस इज योर 8 माइनस का 1, and this is divided by factorial 3 मतलब 6। so you will get this is 8 minus 4 is 4 and 8 minus 2 is 6 and 8 minus 1 is 7 divided by 6। 6 से 6 कैंसिल, 7 4 जा 28। तो यहाँ पर कितनी हमारे पास डिस्टिंक्ट बेसिस बनेगी, दैट विल बी 28। ओके, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पर जो हम वेक्टर स्पेस ले रहे हैं, दिस इज योर Z3 होल स्क्वायर ऑफ Z2। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे n इज इक्वल टू अगेन 2, एंड यहाँ पर जो p है दैट इज योर 3। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बेसिस डिस्टिंक्ट बेसिस is just equal to, simply write the formula first, p की पावर n, p की पावर n minus 1 एक ब्रैकेट में, then p की पावर n minus p की पावर n minus 2 in another bracket, and up to this is p की पावर n minus का p, and this is p की पावर n minus 1 divided by factorial n, फैक्टोरियल n। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, p की पावर n मतलब 3, 3 की पावर 2, n यहाँ पर 2 है, माइनस 3 की पावर 1 एंड देन 3 की पावर 2 माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। so you will get this is 3 3 जा 9 minus 3 एक ब्रैकेट में, 3 3 जा 9 minus 1, this is another bracket, and divided by this is 2। so you know that this is 6 into 8 divided by 2, 9 minus 1 is 8 and this is 6, so this is 4 and 6 4 जा 24। तो यहाँ पर आंसर कितना आया है 24। हमारे पास 24 जो है बेसिस बनेगी। सिमिलरली एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं। So I'm just taking here Z2 थर्ड नंबर पे चीजें। ओके, तो यहाँ पर अगर हम लेते हैं, मतलब सपोज दैट, तो यहाँ पर n बराबर कितना है, n बराबर इज 2 एंड दिस p इज जस्ट इक्वल टू 5। तो सिमिलरली हम डायरेक्ट लिख रहे हैं नंबर ऑफ basis just equal to, you know that this is p to power n minus p to power n minus 1, and then this is p to power n minus p to power n minus 2, and up to this is p to power n minus p, and this is p to power n minus 1, and this is divided by factorial n, and that is equals to what, that is equals to 5 to power 2 minus 5 to power 1,
and this is 5 की पावर 2 minus 1 divided by factorial 2। तो यहाँ क्या मिलेगा 25 minus का 5 and this is 25 minus का 1 upon 2। क्या मिलेगा तुमको, you will get this is 20 into 24 divided by 2 3 हाँ तो हमारे पास 10 बचा and 24 को 10 से मल्टीप्लाई 240 हमारे पास आंसर आ गया। तो कितनी बेसिस बनेगी 240। तो इस तरीके से हम काउंटिंग निकालते हैं नंबर ऑफ बेसिस बाय दिस फार्मूला सिंपली। एक क्वेश्चन हमारे पास डायमेंशनल भी कर लेते हैं, तो लेट अस सी के क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल सब स्पेसेस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर स्पेसेस। तो फाइंड द number of one dimensional and two dimensional subspecies of the vector spaces। ओके सो Z2, तो यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे पास अगर हम बात करते हैं n इज सिंपली 3, ओके p इज सिंपली 2। और अगर हम वन डायमेंशन, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि सब स्पेसिस ऑफ r डायमेंशनल, यू नो दैट एक अभी हमने फार्मूला पढ़ा था सब स्पेसिस ऑफ r डायमेंशनल। that is equal to p की पावर n minus p की पावर r minus 1। this is p की पावर n minus p की पावर r minus 2 up to this is p की पावर n minus p and this is p की पावर n minus 1, है ना, divided by p की पावर r minus p की पावर r minus 1 and this is p की पावर r minus p की पावर r minus 2 and up to this is p की पावर r minus p and this is p की पावर r minus, ठीक। तो आइए जरा वन डायमेंशनल अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा r, यहाँ पर क्या हो जाएगा r इज जस्ट इक्वल टू 1, है ना, वन डायमेंशन चाहिए। n तो 3 है ये, p जो है 2 है, तो 2 की पावर हमारे पास 3 हो जाएगा, 2 की पावर 3 माइनस का 2 की पावर 3 माइनस का तुम्हारे पास हो जाएगा 3 की पावर, ठीक। ओके तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 3 बिकॉज p is 2 and n is 3 and r is 1, so it will have this is p की पावर r minus 1 because it means 2 की पावर r minus 1, it means 1 minus 1, it will be divided by यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर r मतलब 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर r माइनस 1 मतलब 0, वही मतलब 1, है ना। तो सिंपली आगे वो कोई स्टेप ही नहीं बनेगा, तो दिस विल बी 8 minus 1 and divided by this is 2 minus 1 and it equals to 7। तो ये हमारे पास आगे वन डायमेंशन जो सब स्पेसेस बनेंगे वो 7 सब स्पेसेस बनेंगी। और टू डायमेंशन की बात कर लेते हैं कि टू डायमेंशन सब स्पेसेस कितने बनते हैं।
सभी स्पेसेस यहाँ पर। तो उसमें भी हमारे पास p और n तो सेम है, हमारे पास r बढ़ जाएगा, दैट विल बी 2। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2 माइनस 1, एंड दिस इज 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2 माइनस 2, एंड दैट इज योर 1, है ना, यू कैन से 0। यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर r मतलब 2 माइनस 2 की पावर r माइनस 1 इज 1, एंड सिमिलरली दिस इज 2 की पावर 2 माइनस 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इज योर 8 माइनस का 2, एंड दिस इज योर 8 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई दिस इज योर 4 माइनस का 2, एंड देन दिस इज 4 माइनस का 1। ओके, so what you got from here is this have तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, और दिस विल बी 2 into 3, 2 into 3, यहाँ पर 4 - 1 is 6, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 6 into 7 upon 6, इट विल बी कैंसिल, यू विल गेट 7 अगेन। तो 2 डायमेंशनल जो सब स्पेसेस बनेगी वो भी हमारे पास 7 बनेगी। तो बेसिकली आपको ये फार्मूला याद रखना है, इस फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी, तो आप आसानी से कर पाएंगे कि कितने नंबर ऑफ सब स्पेसेस बन रहे हैं, कितने इतने डायमेंशन के, और कितने हमारे पास बेसिस बन रही हैं। तो इन सब फार्मूलों का आपको यूज करना है। ओके, तो कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग कर लेते हैं जो कि बेसिस एंड डायमेंशन के ऊपर बेस्ड है, जो CSIR नेट के अंदर पूछी गई है, तो क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करते हैं। ओके, चलिए ठीक है।